Hello and welcome back to my channel. I'm Sumedha, your host, and today I'm bringing to you episode 2 of the series सोच. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को कि ये लॉ कहाँ से आया, कैसे आया, हमारी डेमोक्रेसी को क्या ये एनहांस कर रहा है या अंडरमाइन कर रहा है, all of that. So let's get into the video and I hope it's helpful for you. And if it is, please don't forget to subscribe. Yeah. So the larger question that we'll be answering today is that how the anti-defection law is undermining our representative parliamentary democracy. And then if it is doing that, how did it come in the constitution? Because 1947 में जब debate चल रहा था about the kind of democracy we want to be, तो we chose parliamentary form of democracy over presidential form. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है वो ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आता है, क्योंकि 4 साल के लिए आप अपना प्रेसिडेंट चुन लेते हैं ना, आप बदल नहीं सकते हैं उसको. लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म वुड ब्रिंग टू यू a government which is accountable to the people on a daily basis, like questions ज़्यादा पूछे जा रहे हैं and the representatives that you choose can talk for you in the parliament. आपकी needs, आपकी demands आपके लिए बात कर पाएंगे. तो देन अगर 1947 में ये हमारी प्रायोरिटी थी तो एकदम से एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया, स्टेबिलिटी अंडर क्वेश्चन क्या आया. एंटी डिफेक्शन लॉ अल्टीमेटली क्या होता है कि आप अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट तोड़ पा रहे हैं, यू आर मेकिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो वेरी अनस्टेबल. So how did we arrive at that juncture? Because it's very important to understand a quick history of how we came to have the anti-defection law in place. So 1967 to 1971, around 32 governments had collapsed. So around 142 MPs had defected and 1,969 MLAs from different state assemblies had also defected. It had become a serious problem and इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी हमारी president थी and out of the 18 states she lost majority in 8 states and 7 में they couldn't form a majority government. So it was the decay of constitutional values and ministers were not attached to the constitution, neither were they attached to the manifesto. They were trying to retain the power. So through the 52nd amendment, Rajiv Gandhi ji got in the anti-defection law and the 10th schedule was added in our constitution. Now there are few key features of the anti-defection law. It lays down the entire process of how a legislator can be disqualified. It lays down the grounds on which he can be disqualified, and this applies both to parliament and to state assemblies, right? And it specifically lays down the grounds. So what are these grounds? If a member voluntarily resigns from a political party, gives up his political affiliation with that party, then he can be disqualified. If he votes against the directions of the political party, he can be disqualified. Or if after 6 months of being a legislator, a nominated member joins a political party, he also could be disqualified. Now आप खुद सोचिए, the key role of a MP is that he can talk for your demands on your behalf. तो अगर एंटी डिफेक्शन जैसा लॉ इन प्लेस है जहाँ पे आप अपनी पार्टी के डायरेक्शंस के अगेंस्ट बिल्कुल वोट नहीं दे सकते, then do you actually have the freedom of expression in the parliament where it is important, where the bills are being passed? ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है, right? And then and this is not just for non-confidence motion on money bills. This applies to every bill, every budget, every act. So it's a very important thing we need to understand. So it's definitely undermining the representative parliamentary democracy का जो ethos हमने build किया था accountability पे. But अगर वो undermine हो भी रहा है, now the question is it meeting the objective जिसकी वजह से this law had come into place in the first place? So
the answer to that would also be that no, because उसका भी एक loophole है जो कि जो कि मेंबर्स यूज करते हैं, राइट? लाइक जैसे द एक्सेप्शन रूल टॉक्स अबाउट अगर आप किसी पार्टी से मर्ज करना चाहते हैं, तो अगर आप 2/3 मेंबर्स के साथ किसी पार्टी में मर्ज करते हैं या किसी पार्टी से निकल जाते हैं, तो देन यू विल नॉट फेस द एंटी डिफेक्शन लॉ. तो इसी की वजह से हम बहुत सारे केसेस सुनते रहते हैं, कभी कर्नाटका में, कभी मध्य प्रदेश में, गोवा में, पुडुचेरी में. वी कीप कमिंग अक्रॉस स्टोरीज जहाँ पे वो हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमपीज हो रहा है एंड गवर्नमेंट्स फॉर्म नहीं हो रही हैं. सो इंस्टेबिलिटी तो लूपहोल की वजह से ज्यादा कॉज हो रही है. तो एंटी डिफेक्शन लॉ, हाउ इज इट हेल्पिंग? That's the biggest question that I want to put forward to my audience. You have to analyze, is anti-defection law doing anything to actually help our democracy become better? Because ultimately we want that we have a stable government and वो stable government decisions ले पाए हमारे लिए, right? तो ये एक इंटर पार्टी प्रॉब्लम लगता है. लाइक इफ पीपल हैव अ लाइक अगर पार्टीज के अंदर विद इन द पार्टीज डेमोक्रेसी हो एंड हर कोई अपनी कैपेबिलिटीज के थ्रू राइज कर सके, ठीक है, तो नॉट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, नॉट बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, इफ अ पर्सन कैन राइज ऑटोमेटिकली ड्यू टू हिज कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स, then this would happen really less, because ultimately people are defecting to retain the power. तो अगर वो अपनी पार्टी से एफिलेटेड रहें, अपने मैनिफेस्टो से जुड़े रहें, कॉन्स्टिट्यूशन एथॉस में बिलीव करते हैं, देन ये वी विल नेवर रीच दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली डेट्रीमेंटल टू द डेलिबरेशन प्रोसेस इन पार्लियामेंट. लाइक आप एक बिल को ला रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर बिल्स हैं, उसमें हमारे एमपीज इतने सारे फार्मर्स हैं, तो उन सबका डिफरेंट अगर हमें पर्सपेक्टिव मिलता, डिफरेंट वोटिंग होती, तो शायद बहुत बेटर तरीके से सब कुछ हैंडल हुआ होता एंड वी एज पब्लिक वुड हैव बीन बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट क्यों ये बिल आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज वी वुड नो द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट एमपीज दैट यू हैव अपॉइंटेड फॉर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू. So it's something to think about, and ultimately the citizen should be benefited. That is something that you should remember always. Like in the democracy, citizen is king. जैसे वो बोलते हैं ना, customer is king. तो in a democracy, citizen is king. So is it helping the citizen or not? आप इसे judge करिए and leave it in the comment section whatever you think should be done about this. Thank you so much for listening. And this is where we come to the end of the discussion. Hope to see you soon. Please like, share, subscribe. Thank you.